we have div 4 Codeforces div 4. So I am going to record myself while giving the contest. So just few seconds left to start the contest. So let's wait once it got started. So just few seconds we have to wait. Okay, so the contest has been started. So let's move to the problem statement. Okay. So my network is little slow, that's why it's taking time. So okay. So just few seconds. Refresh link href on refresh. So it's just taking time. Okay. So this is the first problem statement we have. The problem is Vladislav has a string of length 5 whose characters are A or B. Which letters appear most frequently, A or B? Okay. So which letter appears most frequently, A or B? So how we are going to solve it? It's very simple. Okay. So in each test case, let's take the string s as input, C in s, and then we have what we have to do. Let's say we have two variables, int a equal to 0 and b equal to 0. Okay, and let's iterate over the string, and if ch is equal to a plus plus, not really a, it's capital A, and then in the else case we will have to increase the count of b. So if a is greater than, which is occurring most frequently, that means the occurrence is, whose occurrence is greater, that's what we have to. If a is greater than b, then occurrence of a is greater than occurrence of b, and in that case we will simply print a, and in this case we will print b. So let's check it out, it working or not. So we have a small error. Okay, so see it works or not. It will work, most probably it will work. अबे यार कितना टाइम ले रहा है. So it passed. Okay, so we can submit it. Okay, so here is the first. Okay, okay, so okay, move to the next question. We have Vlad and shapes. So we have an n cross n, or a square grid. Okay, a triangle or a square is drawn on the grid with symbol 1. Okay, a triangle or a square can be made using the symbol 1, or it can be with symbol 1 or with symbol 1. So using in grid there are characters. So basically using the collection of characters 1, we want to build a triangle or a square. So as he is too busy being cool, he asks you to tell him which shape is drawn on the grid. So he's so busy, so he is asking you to find that which shape he can build. A triangle is a shape consisting of k consecutive rows, and okay,
So he is asking you to find, for the given grid, determine the type of shape that is drawn on it. So people are asking you to find which shape he can draw. Triangle, otherwise without quotes. Okay, the grid. So two left picture contains example of triangles k equal to 4, k equal to 3. Triangle is a shape consisting of k consecutive rows, okay, where ith row has 2 into I minus 1 character. This is not a triangle. This is not a triangle. This is, and this is a valid triangle. So basically this is not a valid triangle according to the question it is telling. So the triangle should be like this. Okay. So an upside down triangle is also considered a valid triangle but not rotated by 90 degree. So these two triangles are the valid triangle, and you can see what about squares? Nothing. Squares are simple squares. So for the given grid, determine the type of the shape that is drawn on it. So you have to basically determine the type of the shape. Okay. The grid contains exactly one triangle or exactly one square that contains all the ones in the grid. Okay. So basically all ones should be inside that grid triangle, or all ones should be inside that. So the shape will consist of all the ones present in the grid. So that's it we have. So basically hundreds are there. Okay. So how can we approach this solution? It is telling that it is either a square or triangle. So definitely it is either a square or triangle. So why not we will check for the square, and why not we will check for the square. Okay, and that's it we have. Why not we will check for the square, and if it is not satisfying the square, that simply means it is what? Triangle. So how we can do that? So basically just take the input n, in integer n as input, and then just make a grid. Just make a grid of n cross n size. Okay, it's grid. Okay, and then we simply take all these things as input. So I equal to 0, I less than n, and I plus plus, and in the same way we can iterate over the column int j equal to 0, j is less than n, and j plus plus c in grid of ij. Grid of, okay, one thing. Okay, so let's have a put a variable int count equal to 0. Okay, if grid of I j is equal to 1, then we will do things. Okay, so first take the input c in grid of I j. Okay, that's it we have. So once if this the cell of this grid I comma j contains 1, that then we will increase our count by 1, and we will simply do one thing. Okay, so we want to calculate few things. Int j1 equal to n plus 1
comma j2 equal to -1 and int I1 is equal to n plus 1 and I2 equal to -1. Okay, so do simple thing. J1 equal to minimum of J1 comma J, and in the same manner J2 equal to maximum of J2 comma J, and in the similar manner we have I1 equal to maximum of I1 comma I, and in the similar manner I2 is equal to I1, it will be I2 na, it will be I2. In I2 we are going to store the maximum things, and in I1 I am going to store the minimum things. I2 I1 comma I, that's it we have. So definitely we have these things. Okay, and let's say we have count, and we have number of ones in our cell, and then we have number of so basically the area. Let's find the area equal to ABS of I1 minus I2 plus 1 into J1. No, it will be ABS of, and here also ABS of J1 minus J2 plus 1, and multiplying these things we will get the area. If area is equal to count, that means simply C out. What will be the things we want to see out? That means definitely the things we have is a square, because definitely the things are a square. Okay, in del, and in the else case we have C out triangle. So triangle, that's it we have. Okay, so the logic is correct. We can simply check for the square, then check for the I have checked for the square, and if it is not satisfying the square condition, then definitely it is the triangle. So it's according to the question, it is either triangle or a square. It is failed. Triangle. Why? Okay, in I2 we are going to store maximum, in J2 we are going to store area is equal to count 4 2 cross 2. What is the problem? So it is giving triangle in all the case. Okay, so let's print C out I1 I2 .
I2 and J2 is not updating. Why I2 and J2 is not updating? I2 equal to max of I2 comma I and J2 equal to max of J2 comma J. Why it is not updating? I equal to 0, I less than n, I plus plus C in grid of ij. At int x. Why this value is not updating? I2 एंड J2 चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत है भाई? कहाँ गलती हो गया यार? काहे ना अपडेट हो रहा है? इसमें जा ही नहीं रहा है भाई। ये एरे है ही नहीं, ये स्ट्रिंग एस है इनपुट में। So it was basically a string, that's why we have problem in updation. Now it's correctly updating the things. So it was basically not a integer input, that's why it was not working. So no problem.
So it was basically a string input, not a integral input. It took time. Okay, let's move to the next question we have. Okay, okay. So wrote the integer from 1 to n inclusive on the board, then he replaced each integer with the sum of its digit. Okay, so what is the sum of the digit on the board now? So we have to, okay, so basically we have some number of test cases, and in each test cases we have to find from 1 to n the sum of all the digits. So it's basically a DP problem, you can say that. Okay, so Prav, don't worry, we will simply compute a table. Let's say, okay, so int dp equal to 1 0, how much range is we have to calculate, 2 into 10 to the power 5. So let's calculate for 2 2 4 5 6 2 2 4 2 6. So let's calculate the answer for the int I equal to 0, I less than equal to 2 2 2 2 4 1 5 1 6. So that's it we have. So I plus plus, so start from the 1. Okay, so int j equal to 0, j equal to I, and int sum equal to 0. So while j is not equal to 0, sum plus equal to j modulo 10 and j by equal to 10. That's it we have. And then dp of I plus equal to dp of I minus 1 plus sum. Okay, and we will simply in each test case we will take the integer n as input for each test cases, and then we will see out that, and in this way we can optimize our solution a bit. So that's it we have. So let's see it works or not. Two to 4 to 6. Why it is not working? So here is the problem. C ought pk indel. Let's see. It's not entering in the int main. Okay, so let's make it vector of int dp do 2 to 4 to 6 comma 0. So let's fill everything with 0. I think now it will work, because garbage value was there in the dp table,
and which is making issue while summing the things up. So let's move to the next question we have. Okay, so n non-negative integer and wants to divide all of them into several groups so that in any group n non-negative integer, some players has n non-negative integer, he want to divide all of them into several groups so that in any group any pair of numbers does not have matching bit values among bits from 1st to 31st bit. Okay, so that's it we have. That is considering the 31st, the least 31 least significant bit of the binary representation, 1 to 31st bit. Okay, so has n non-negative integer, he wants to divide all of them into several groups so that any group any pair of number does not have matching bit values among bits from 1st to 31st. Okay, so for a given k, okay, for a given k, let k2i denote ith bit in its binary representation. So for example, if k equal to 43, since 43 equal to itna and 43 2 equal to 1 is acha 43 is like this in binary representation and 43 of 1 yani ki first bit of 43 in binary representation is 1 and second bit is 1, third bit is 0. Okay, like that. So this is what the k2i describe. So in binary representation the ith bit of k, that's what it defines the way. So formally for any two numbers x comma y in the same group, the condition x2i is not equal to y2i. Okay, that's it, must hold for all from I ranging from 1 to 31. So what is the minimum number of groups Vlad needs to achieve his goal? Okay, so how many goals he has to achieve, Vlads have to achieve. Okay, so okay, so for that, first what we have to do, basically we want to divide all the numbers in any group if sum is equal to or. If sum is equal to or, that means that is a valid group. So basically we have 10 to the power 5. Two numbers should not be in the same group. Okay, so if we iterate over all the bits from 0 to 31st to 31st bit and okay, okay, if there will be only one bit, अरे यार इतना क्या चिंता करना है, 1434 पहला बिट को अगर केवल कंसीडर करें, if we consider only the first bit in this test cases, then what will be the solution? How many groups we have to decide? Zero, 1, 0, 1, 0. So number of ones at the first bit is 1, 2 and the number of 0 are 2.
basically two group, and according to the second bit, so it's 1:3 ratio, so we have to make, basically we have to make three groups. Okay, 3 1, so we have to make three groups according to second bit, and according to the third bit, so in the first case cases, any two number have same last 31 bits, so we need to place each other in its own group. Okay, let's see the benefits of the line independent. Okay, so according to the fourth, 4 4, so दो जगह सेट है, दो जगह अनसेट है, 3 4 कैसे हो गया? So how can we approach this solution? ठीक है, if you put all the numbers in the try, सब अलग अलग रहेगा, इसको कैसे हल करें? तो अगर हम इस सॉल्यूशन का अप्रोच करें, मान लीजिए पहला बिट के हम सारे 1 को एक तरफ कर दिए, सारे 0 को एक तरफ कर दिए, अब इसमें जो जो नंबर्स हैं फिर उसका हम देखें, कुछ 0 कुछ 1 बनेगा, फिर इसका कुछ 0 कुछ 1 बनेगा, इसका कुछ 0 कुछ 1 बनेगा, करते हो लाइक basically we will first classify into 0 and 1, okay, and then in the second layer it will tell we have to classify in maximum 3 groups. अरे यार तो बड़ा चक्कर है, भाई. Minimum number of groups required to satisfy the condition. एक मिनट,
Find the minimum number required to ensure that there are no block cell with all four diagonal neighbor also being black. अच्छा, minimum number of operation required. We have a 7x7 grid where each cell is colored black or white. In one operation, he can choose any cell and change its color black to white or white to black. Okay, so find the minimum number of 7 सत्ते 49 49 2 की पावर 49. That's no black cell, no black cell. अच्छा, there are no black cell with all four diagonal neighbor also being black. कोई ऐसा ब्लैक सेल नहीं हो जिसका चारों डायगोनल भी ब्लैक हो. हाउ मेनी ऑपरेशन? एक तो है कि सबको वाइट कर दो, ठीक है, ये तो है ही. बट इफ़ वी डोंट वांट टू, if you want to minimize, then how can we proceed? So the basic hint is we have only 49 cells in the grid. So if we have 200 test cases. Okay, 10 की power 8 upon 200, it's 10 की power 6 upon 2. Okay, so how much complexity we can go for? अरे चलो चौथा करो पहले, ठीक है. So export. It had some large test cases. दो नंबर के और सम अगर बराबर है तो उसका पेयरिंग कर सकते हैं. 3 नंबर को तो कर ही नहीं सकते भाई. 2 नंबर का एटॉमिक्स पेयरिंग कर सकते हैं. तो किस किस नंबर का पेयर अवेलेबल है? दैट इज ए और बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, ए और बी इज इक्वल टू ए प्लस बी.
दो नंबर का जॉर ए जॉर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए। ओके ये पता है, अगर ए जॉर बी ए प्लस बी के बराबर हुआ, ये हर नंबर के लिए यूनिक होगा, हर नंबर के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा। दैट इज नॉट just opposite of that from the highest bit points of, वो सारा बिट तो जीरो होना ही चाहिए भाई, वहाँ से वहाँ तक में शॉर्ट कर देते हैं, छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फ्रॉम द लार्जेस्ट वन। अगर हम सबसे बड़ा से चलें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जीरो होगा, बाकी सब जगह वन होगा। इज इट एग्जिस्ट और नॉट? ओके, सो हम सबसे बड़ा से चलेंगे। ठीक है, अच्छा क्या तो पेयर बना पा रहे हैं? ऐसे कर सकते हैं नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, so let's have integer n as input int and c in n. Okay, then have set of int st, let's make it. Then we have vector of int arr of size n, and then let's iterate, let's have a loop from int I equal to 0, I less than n and I plus plus, and c in arr I, and then sort arr dot begin comma arr dot end. Okay, let's make it r begin. Okay, and it being the r end, and then we will iterate from the largest one. So here is one more thing, at the same time insert map of int comma int. Okay, so mp of arr I plus plus. Okay, and then we have let's make it map of int comma int mp. Okay, and then let's iterate from int I equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, so we will find the number of pair we can make. So if mp of arr I is equal to 0, then continue, simple, continue, अरे continue यार, it is basically continue. And if this is not the case, then what we can do? So we can simply do one thing, let's find if its pair is exist or not. So how can we do that? Function to reverse the bit of
or integer in C++. So I want to basically find the not. Control C. Let's put this function here. So I will make it int, okay, and then let's make it int. Cannot overload function distinguished by return type. Okay, now it's good to go. So let's say int rev equal to reverse bits, control C. Okay, that's it we have. So rev equal to reverse bits 1, so ARRI. Okay, so if MP of rev is not equal to 0, then simply count plus plus or MP of rev minus minus. Okay, after that n minus equal to count into 2 and C out count plus n indel. So that's how our solution I think will look like. Okay, so let's see it works or not. It failed. So 3047, how it is responding. Now let's n minus equal to count into 2. Continue. नहीं तो MP of C out rev and ARR I indel. Let's see how it is responding. How it is responding यार, ऐसे नहीं, इसको खुद से लिखते हैं, ठीक है. n and 1 for int I equal to 32 I greater than equal to 0 I minus minus, ठीक है. Okay, so int val equal to 1 left shift 1 ll left shift I. So if n and val बराबर 0, ओके, और इल्स केस में
यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हम फ्लैग को कर देंगे 1. सो int flag equal to 0, int flag equal to 0. So here if flag is equal to 1, answer plus equal to val. Okay, that's it. It we have. Now I think it will look. It is giving 2 3 4. 4 के लिए 3 ठीक है, बाकी सब जगह 1 होना चाहिए. 4 के लिए 3 है ना, 4 3 पेयर हो जाएगा. फोर थ्री पेयर हो जाएगा. 4 3 पेयर हो सकता है ना यार. क्या सवाल बोल रहा है भाई. In the first case, any two number have the same 31st bit, so we need to place each number in its own same last 31 bit. Last 31 bit. अच्छा, अबे यार 31 बिट. आंसर प्लस इक्वल टू 0 है तो आंसर प्लस इक्वल टू वैल. क्या यार, how can it be 3? अरे इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है.
भाई क्या हो रहा है? MP of ARRI is equal to 0. Continue. MP of ARRI प्लस प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. C in ARRI, MP of ARRI is equal to 0. C ought rev ARRI. कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई? एक ही बार लूप चला, दूसरा बार में. जीरो 2 1 4 7, 0 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7. तो काउंट का वैल्यू 1 होगा ना भाई? क्या यार? क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, 2 कैसे भाई? अरे काउंट को 0 से इनिशियलाइज करना है, 1 से काहे कर दिए भाई? So now I think it will work. चार 1 3 2 कहाँ पे? 4 1 3 2 2 3 2 1, यहाँ पर 1 कहे आ गया भाई. हाँ 2 आएगा भाई, 3 है तो 2 ही ना आएगा. In this test cases it is problem. So basically put it like that. क्या यार?
Now it's correctly working, so we can submit it. So it was not that much tough, but I was not, I got the solution actually initially, but no problem, it happens. Okay, so it happens many times. Okay, okay. So let's move to the next question we have. So Vladislav has n cards numbered from 1 to n. He wants to lay them down in a row as follows. He wants to lay them down in a row as follows. In rows as follows. So first he lays down all the odd numbers card from smallest to largest. Okay. So odd smallest to largest, yani ki 5 3 1, like this will be the first row. The next he lays down all the cards that are twice an odd number from smallest to largest. All cards that are twice an odd number from smallest to large. Okay, so the smallest to largest, yani ki second multiple of all these things, yani ki 2 6 10, like this. Okay, and after that he lays all the cards that are 3 times an odd number from smallest to largest. So the first multiple of odd number, then the second multiple, then third, then fourth, like that. So here is the kth card he lay down in this process. Acha. So and the position of the card that you need to output. Okay, kth card. A smallest odd divisor or largest odd divisor you have to find for the number. For any number, just find the largest odd divisor the number has. If you find that, then you can definitely find the Ross number it has. Okay.
they are asking you to find where is the kth card he lays down in this process. So kth card he lays down in a raw number, or in that raw number what is the place. So let's say for n barabar 7 it will be the first, for 2 it will be the second na. It's third. अच्छा, first all the odd number card 1 3 5 7. Next all the odd cards that are twice an odd number in the order 2 6. सेवन टू का 3 कैसे हो गया आंसर, 7 3 का 5 कैसे हो गया आंसर। अच्छा इस तरह से बोल रहा है ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए 1 2 3 7 3 का 5 हो गया। क्या है भाई, टू का थर्ड फ्रॉम इंडिंग, द पोजीशन इज फ्रॉम इंड। ओके सारा और नंबर प्लेस किए। इवन नंबर में ये क्या नंबर है, सारा इवन आएगा उसके। If the number is odd, then we can simply find that number. पहले पूरा का पूरा odd आएगा, first all the odd numbers will come, ठीक है, सारा का सारा odd आ जाएगा, फिर even आ जाएगा। तो जिसका कोई ऑड डिवीजर है, लार्जेस्ट ऑड डिवीजर
अगर बाई एनी चांस लगा कि हम ये पता कर सके कि ये कहाँ पे आया है। log n log n plus log n. So where the number k will take place from last, if the row will get completed. That's what the question is asking for you. And for 1 it is 1, for 1 it is 1, for 2 it is 3. Okay, and then for 3 it is थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, किसी भी ये ऑड नंबर का क्या मल्टीपल है। और कोई नंबर इवन है तो लार्जेस्ट ऑड नंबर जो इसका डिवीज़र है, ये अगर फाइंड कर लें हम, लार्जेस्ट ऑड नंबर विच इज़ द डिवीज़र ऑफ दैट इट्स के, largest odd number which is divisor of k. If you find that, then we can find the raw number. Once we find the raw number, then what is it? For 1 it is 1, for 2 it is 3, 5 for 2 it is 3, from end it is 3, for 5 it is also 3, for 3 it is 5. नहीं यार, 1 3, कहीं होगा भाई। What is the kth card he lays down? अच्छा, what is the kth card? So they are asking you for the kth card lays down. What is the kth card? They are asking you. Okay. So what is the kth card? So the first card is first, the second card is third. Okay, so what is the kth card? What is the kth card? First multiple, second multiple, third. So basically the kth card will be either the first multiple, the second multiple, the third multiple, the fourth multiple, the fifth multiple, or it can be any multiple. So first try to find what is its multiple. So we can directly find the largest odd number which is divisor of this given x, k. Once you find that, okay, no, so k, okay, so basically, so we know the odd numbers. Okay, how many numbers? So every odd numbers, in these odd numbers, some had second multiple and which will be lies here.
third multiple, fourth multiple, fifth multiple. So these multiples are in the sorted order. So the odd number whose second multiple will be in the range. So we can apply binary search over here. Can we apply binary search over here? Kth number. Kth number. So we can't write a solution of root 10. रूट के का सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते भाई. कौन सा नंबर kth नंबर होगा? फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल. टू आई प्लस वन ये है 2 टाइम्स 2i प्लस 1 और 3 टाइम्स 2i प्लस 1 4 टाइम्स 2i प्लस 1 2i plus 1 should be less than equal to n. 2i should be less than equal to n minus 1. I should be less than equal to n minus 1 by 2. ठीक है, ये हो गया. n minus 1 by 2 plus n minus
2/4 plus n minus 3/6 plus n minus 4/8. That's how the thing will grow. Sigma n minus r by 2r. Okay. अच्छा ठीक है. n by 1 plus n by 2 plus log n. ज़्यादा से ज़्यादा log n ही तो होगा भाई. लॉग एन ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई. लॉग एन कितना रॉ हो सकता है? लॉग एन रॉ हो सकता है, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा भाई. समझो यार. 2 6 10 14 भाई. 3 नहीं हो सकता भाई. 9 हो सकता है. 3 नहीं हो सकता लेकिन.
भाई कहाँ बन रहा है, अटक रहा है सवाल। क्या है क्या है क्या है क्या है इसमें? केथ नंबर कौन सा है भाई? वो सब छोड़ो भाई, ये सोचो कि केथ नंबर कौन सा है? केथ नंबर कौन सा नंबर केथ है? विच नंबर इज एक्चुअली द केथ नंबर? ठीक है, राहुल एन तक थोड़ी जाएगा भाई, एन तक जा सकता है। ऑड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई प्राइम और तो सब आएगा भाई। Which is the kth number? kth नंबर कौन सा है? अच्छा, जो प्राइम है उसको तो छोड़ दो। पहले ऑड के लिए तो आंसर हो गया, इवन के लिए कैसे करें? जो ऑड नंबर, जो इवन नंबर, किसी भी ऑड नंबर दो का मल्टीपल, क्या गो ऑड है ये पता चल गया, क्या गो इवन 2 का मल्टीपल होगा इस रेंज में, ऑड का सेकंड मल्टीपल होगा। एक काम करते हैं, लेट्स लीव दिस क्वेश्चन एंड ट्राई दिस टूस। शायद so we will solve the last question. Okay, it's a tree question. So had son who really wanted to go to MIT, the college patrimony at MIT can be represented as a tree of n vertices.
The college dormitory can be represented as a tree of n vertices, each vertex being a room with exactly one student. A room with exactly one student. So, okay. So a tree is connected undirected graph with n vertices, and tonight there are three types of students: student who want to party and play music, स्टूडेंट जो कि पार्टी करना चाहता है एंड प्ले म्यूजिक, स्टूडेंट हु विश टू स्लीप एंड एंजॉय साइलेंस। सो तीन टाइप का स्टूडेंट है PSC। सो इनिशियली ऑल द एजेस आर थीन walls and allow music to pass through. So when a partying student puts music on, party and play music, it will be heard in every room. However, we can place अच्छा, सो ठीक है। सो अगर पार्टी किया जाता है किसी रूम में तो इट विल बी हर्ड इन एवरी रूम। हाउएवर वी कैन प्लेस सम थिक वॉल ऑन एवरी एजेस। सो थिक वॉल डोंट अलाउ म्यूजिक टू पास थ्रू देम। सो थिक वॉल जो है अलाउ नहीं करता है म्यूजिक को टू पास थ्रू देम। यूनिवर्सिटी वांट्स टू इंस्टॉल सम थिक वॉल सो दैट every partying student can play music and no sleepy student can hear it. Okay, इसका मतलब सीधा सा बात है, किसी भी पार्टिंग स्टूडेंट से चलो और पार्टिंग पे जाते जाओ। अच्छा, इस कनेक्टेड कंपोनेंट में सो यू कैन विजिट, ठीक है। हाँ यार, तो कितना मिनिमम थिक वॉल्स आपको एजेस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो पार्टी से पार्टी, पार्टी से पार्टी, पार्टी से पार्टी, मिनिमम नंबर ऑफ थिक वॉल्स। यार इसको तो किया जा सकता है भाई। सो पार्टी वाला जगह से जो है DFS करो और पार्टी वाला पे खाली जा सकते हैं, ठीक है। पार्टी वाला से DFS करो, खाली पार्टी वाला पे जा सकते हैं। और उस DFS के बाद कैट ऐसा नोड है, ठीक है। तो इसको तो कर सकते हैं, काम करेगा जी। जैसे पार्टी एक, अच्छा P से C पे भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P से C पे भी जा सकते हैं। अच्छा, किसी P से जिस C पे जा सकते हैं बिना S को होते हुए, उस सबको क्या करते हैं कि किसी P से जिस C पे जा सकते हैं बिना S के होते हुए, उसको P से करते हुए निकल जाओ, बात ख़त्म, ठीक है। अब क्या करो ना, हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे ही करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, int n C in n। अच्छा, ट्री का खासियत क्या है, व्हाट इज़ द बिहेवियर? A2 से लेकर के n तक दिया है।
सो हम एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट adj ऑफ n+1, ठीक है, फॉर इंट i बराबर 2 i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ओके, i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और फिर इंट p सी इन p लिए, और फिर p माइनस माइनस किए, और फिर adj ऑफ एंड देन adj ऑफ p डॉट पुश बैक, और फिर adj p से हम कहाँ जा सकते हैं, i पे जा सकते हैं, ठीक है, और हम फिर i से p पे जा सकते हैं, adj ऑफ i डॉट पुश बैक p, ठीक है, i से p पे जा सकते हैं और p से i पे जा सकते हैं। और इतना करने के बाद हमको स्ट्रिंग s लेना है, इनपुट स्ट्रिंग s, और c इन s कर देना है, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड ले लेते हैं, ठीक है, और इसका साइज रख लेते हैं n, 0, ठीक है, फॉर इंट i बराबर 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, इफ s ऑफ i इज इक्वल टू पार्टी, इफ here इज a student who want to party, तो यहाँ पर वो ऐसा छात्र है जो कि पार्टी करना चाहता है, तो हम यहाँ से dfs करेंगे, ठीक है, dfs करेंगे और विजिटेड ऑफ, इसको i देंगे और बोलेंगे भाई विजिटेड ले जाओ, और बोलेंगे भाई p ले जाओ, p नहीं ले जाओ यार, s ले जाओ स्ट्रिंग, और एक चीज़ और ले जाओ, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कैरी ऑन विथ योर, ठीक है, लेट्स हैव ए वेक्टर ऑफ कैर s1 and its size is n, okay, so take it with you yourself, okay। और हम इस dfs को लिखते हैं, ठीक है, void dfs, और हम किसी वर्टेक्स v पे है, और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक विजिटेड है, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, एंड हमारे पास एक स्ट्रिंग एंड s है, और हमारे पास और क्या है, हमारे पास एक वेक्टर ऑफ केयर एंड s1 है, वेक्टर ऑफ केयर एंड s1 है, और हमारे पास एक चीज़ और होगा, वेक्टर ऑफ इंट adj होगा, वेक्टर ऑफ इंट adj होगा हमारे पास। These are the things we will have. We have to carry on for the DFS and then adj. So p means party, and don't care, the person who don't care actually is c. Okay, that's it we have. So we will simply, if this of v, then return, if s of v is equal to s silence, then also return, okay। else case में we will simply do one thing, s1 of v is equal to capital P, party, okay, and then for int ch adj, okay, and we have to simply do dfs ch, we will go to the ch and we will carry our visited vector, then our vector of care, and then our adj.
So these are the things we will carry on. Okay, so anything left here? With s1, so also we have to take our s. Now I think the things are sorted out. And one more thing we have to do is visited of v is equal to 1. So adj of v, so why not we will check it that it's for int I equal to 0, I less than n and I plus plus c ought visited of ch. Okay, that's it we have. So visited of, visited not, no visited, but s1 of I, that's what I want to print. Okay, so let's see the thing we have written is working or not. So prevention is better than cure. अच्छा चलिए भाई P और P बताइए. अच्छा ठीक है. अच्छा कुछ जगह P होगा और S होगा और तो हम एक काम करते हैं ना भाई, इसमें कर देते हैं A, ठीक है, और हम इतना करने के बाद एक और लूप चलाते हैं फॉर इंट I बराबर 0, I लेस देन n एंड I प्लस प्लस इफ si is equal to A, then s1 is equal to A, then s1 of I equal to s of I. ओके हम ऐसा कर देते हैं. अच्छा PSP ठीक है, अभी ठीक है. अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक फिर फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन एन I प्लस प्लस, और हम अगर देखेंगे इफ si इज इक्वल टू si इज इक्वल टू अगर s है तो हम बोलेंगे भाई एक काम करो, यहाँ से DFS 1 करो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, DFS 1 करो और I पे जाओ और क्या क्या लेके जाओ, ADJ लेके जाओ, और एक काम करते हैं सेट ऑफ इंट ST ले लो तुम, ठीक है, और ST लेके जाओ, ठीक है, और S1 भी लेके जाओ. हाँ अच्छा ठीक है, ST लेके जाओ भाई, S1 भी लेके जाओ, ST भी लेके जाओ. तो पहले S1 लो और फिर ST ले लो, ठीक है, और हम एक बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट vis1
ऑफ n कॉमा 0, ठीक है। ये जा ही नहीं पाएगा वहाँ पे। एंड this one of I is equal to 0, तभी होगा। और हम क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, फॉर इंट आई टी और एस टी पर इटरेट करते हैं और हम देखते हैं फॉर इंट सी एच ए डी जे ऑफ आई टी पर भी हम आइटरेट करते हैं, ठीक है। बुल चेक इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, ये इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इंट काउंट इक्वल टू 0 इफ s1 ऑफ ch इज इक्वल टू p पार्टी, देन काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि आंसर प्लस इक्वल टू काउंट होगा और फिर विस वन ऑफ आई टी इज इक्वल टू 1 होगा भाई। और हम कर देंगे फिर अंत में सी ऑट आंसर इन डेल, ठीक है भाई। ये कोड मेरा काम कर रहा है तो इसको क्यों ना कमेंट आउट कर ही दे, ठीक है। सो इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। इंट काउंट नहीं, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम आंसर को 0 कर लिया है, तो ये चीज़ ठीक है, ठीक है। अब हमको DFS1 लिखना है, सो हमको DFS1 लिखना है। तो हमारे पास एक वॉइड है और DFS1 है और फिर हमारे पास क्या है, इंट भी है और फिर हमारे पास वेक्टर ऑफ इंट ADJ है और हमारे पास क्या है, साथ में एक स्ट्रिंग नहीं है, वेक्टर ऑफ कैर हमारे पास है और ये इसका नाम S1 है और साथ ही साथ हमारे पास एक सेट ऑफ इंट ST भी है। इतना सारा चीज़ हमारे पास है, बट अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने ADJ का जिक्र यहाँ पे वी हैड, ओके, IADJ S1 ST, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ST डॉट हमको पहले करना है इफ़ ST डॉट काउंट भी रिटर्न कर जाना है, साथ ही साथ इफ़ S1 ऑफ भी इज इक्वल टू P हमको रिटर्न कर जाना है, ठीक है। और क्या करना है हमको, नहीं, हमको कुछ नहीं करना है और हमको ST डॉट इंसर्ट क्या कर देना है, भी कर देना है और फिर हम एक वी विल मूव टू द चाइल्ड CH ऑफ ADJ we will iterate over the child of overall the is going out from V, okay, and then we will simply call our DFS and give him CH and ADJ and S1 and ST, okay, that's it, we have S1 ST, so I think it is okay। तो हमने क्या किया, वही किया, जब हमको S मिला तो हम विजिटेड ऑफ, और अगर C भी है तो हम जाने दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P है तो हम रिटर्न कर जा रहे हैं, ओके ओके ओके, नो वरी। जीरो,
भैया क्या बात है भाई, एस पे गए, एस पे गए भाई। एस डाल दिए कि S1 डाले भाई, यहाँ पर एस डाले हैं कि S1 डाले। वी हैव पुस्ट S1 भाई, S1 प्रिंट करो तो कंट्रोल व्हाट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था यार, काम तो कर ही रहा था। n,0 S1 ऑफ I इज इक्वल टू, सो इस तरह से होगा काम। अब शायद काम करे। ठीक है, सी ऑट, ये यहाँ पे दिक्कत है, इसको रेफरेंस बनाना है। वी हैव टू मेक दिस सेट, so 1 2 2, why it is giving 2, PPSS PC, तो ये दूसरा टेस्ट केस में गलत दे रहा है क्योंकि PCSS है भाई। देखिए ठीक है, तो 0 नहीं, 1 से 0 है कनेक्टेड। फिर देखिए 2 3 4 और इसके सामने रखा हुआ है 1 2 2, तो ये हो गया 1 0 2 1 3 1। तो फिर 1 से 0, फिर 1 से 2 भी है और फिर 1 से 3 भी है। ये इस तरीक़ा से है चीज़ हमारे पास, ठीक है। और फिर PCSS है, तो फिर PCSS डॉट हो गया, ठीक है। ये नहीं, 3 से 1 है, 2 से 1 है, फिर 3 से भी 1 है, ये नहीं है, ये इस तरह से है। तो ये 2 बाउंड्री आएगा, सही बात है भाई। एक आ रहा है, लेकिन इसका आंसर 2 दे रहा है जो कि 1 आना चाहिए। इसका कारण तो पता चल गया हमको, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा भाई, कि इस एक पे यहीं पे डाल सकते हैं ब्लॉकेज। फैला हुआ भाई हर जगह। नहीं भाई, P से P पे ही जाने देते हैं। या विजिटेड ऑफ V इज इक्वल टू C, C है तो भी रिटर्न कर जाओ भाई, क्यों ही जाओगे, क्यों फैलाओगे उसको।
अच्छा ठीक है, तो we will try to submit this solution. Let's see it works or not. I think it should work. So let's see it works or not. तो ये काम नहीं कर रहा है. दिस सॉल्यूशन इज नॉट वर्किंग. क्या कर सकते हैं यार, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं भाई. ये बोल रहा है भाई. ये सी वाला सेल ही तो है. सबको पकड़ो भाई. जिस एज पे
कैसे होगा भाई, किस किस एज को तोड़े।